Note-taking is an essential part of a university. Why note-making is important? Yes, it is important for revision. It will help you to revise the frequently occurring topics. And second, it helps you to, bring down the large voluminous static portions into small and crisp notes. So this will again help you in your revision, plus it will make it easy for you to revise and visit these areas and contents whenever you want. Here are 4 note-taking methods that you can use with your own practice. The Cornell note-taking method was a technique developed by a professor at Cornell University. The purpose of this method is to provide students with a way of condensing and organizing notes without having to copy professors' notes word for word. The paper is divided into 3 sections. The Q column is for your questions, comments, and keywords that come up during the lecture. Qs are made to help prompt key concepts from the lecture. This will help you during your exam preparation. The notes column is for all the notes you take in class. The summary section is a brief paragraph highlighting the lecture. Remember to write this in your own words. This encourages self-reflection. Most students use this next method without knowing that there's a name to it. In the outlining method, start with noting a major point, theme, or section on the left side of the page. Indent to write notes about minor and supporting points underneath the major point. Label your indented points by using numbers or bullet points. The outlining method is best used for classes that require highly structured and logical notes. The next method is the mapping method. Remember the hundreds of mind maps your teachers made you draw in middle school? Well, that's because they knew just how helpful they'd be in your future. The mapping method can maximize active participation and emphasizes on critical thinking. It makes you focus on key points rather than writing everything you hear. The mapping method is done by linking several subpoints around a major topic. To begin critical thinking, you should then begin to find links between different points or topics. This last method is called the charting method. It is most useful if your lesson structure is chronological, so it may require a bit of planning ahead by checking your syllabus before class. For this method, determine the categories covered in the lecture and set up your notes in advance with headings to support the material. The headings will depend on the course you are taking. If, for example, you're taking History of Canada, your headings may look like Period, Important People, Events, Significance. Hello everyone, my name is Sanya Chhabra and I have secured All India Rank 84 in UPSC Civil Services Examination 2018 and it was my first attempt. And today I'll be discussing with you the art of note making that I followed. So note making is one of the most essential parts as far as UPSC Civil Services Examination preparation is concerned. The key lies in how effective notes you make. What I did was I maintained separate notebooks for all the GS papers, be it GS 1, 2, 3, 4, optional for essay and for prelims if you have to note down certain facts. As far as the separate notebooks were concerned, you can add all the current affairs material that you're reading either from the newspaper or from monthly magazine or Yojana in the given subheading that is mentioned in the syllabus. Now, your entire notebook has to be filled with all the topics that are mentioned in the syllabus. For instance, in paper 1 of GS, there is history, geography, society, art and culture. So these are the broad topics that you need to write in that one notebook. Or maybe you can form separate notebooks for GS1 part-wise. And then in all these subject-wise notes, you have to write static notes. If you have joined any coaching center, then they'll be providing you with these notes. And in all those static notes, have some space left. If you're making online, then there's no such requirement. Add all those notes under the subheading that is
given in the syllabus. So your notes should be bifurcated subject wise. You should not write all the notes in one notebook. At least that is something that I would suggest, so that it becomes easier for you to segregate your notes, one, and when you revise them, they will be imprinted in your mind topic wise, and that will make it easier for you to replicate it in the mains examination or maybe prelims examination. So separate notebooks, syllabus wise subheadings, addition of static as well as current parts under those subheadings itself. Then I also maintained a separate notebook for government schemes which help you add to the answers, especially in the conclusion. When there's a certain question on, say, problems of a particular area, or what suggestions would you give to solve this area, then schemes come handy. When you write government schemes, it helps you end the answer on a positive and an optimistic note. So that helps you in enriching the answer by providing government schemes. So that was all about note-making strategy. It should be very well streamlined and planned. Do not mess things up by maintaining just one notebook and adding all the notes there in one notebook. I believe that it is important to maintain separate notebooks for all papers and then note down the current affairs or static part subject wise under the given headings in the syllabus. That's all the very best, and thank you. Hello friends, my name is Dr. Anand Kumar Sharma. My rank is 62 in CSE 2018. In this video, we'll be talking about notes making and how to make notes from the newspaper as well as from other areas. So there are two ways of making notes. Some people do is they don't generally prefer notes as of separately, and what they do is write on the books only and make additions and highlight those things. And दूसरा तरीका है कि आप important points को highlight कर लीजिए, कि जैसे suppose करो आप पढ़ रहे हैं किसी इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहे हैं एथिक्स में, तो आपने जो उसके डेफिनेशन के मेजर 4 पॉइंट्स हैं और 2 एग्जांपल एक जगह लिख के रख लिए ताकि आप आखिरी में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो नोट मेकिंग का सबसे की पार्ट क्या है, आप पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखते हैं, आप पूरे लाइंस नहीं लिखते हैं, आप कीवर्ड्स को लिखते हैं कि वो कीवर्ड ना मिस हो जाए आपके आंसर में जब भी आप कर रहे हैं। एक कॉपी मेंटेन करनी है जीएस के लिए। जीएस में आपको क्या करना है, ऐसे ही आप सेक्टर डिवाइड कर लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे, रोड, ऐसे करके हर पेज पे उनके बारे में 2 या 3 फैक्ट और रियल गुड एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स, सक्सेसफुल मॉडल, गुड एग्जांपल्स, गुड फैक्ट्स, गुड कोट्स, ये एक जगह लिख लीजिए आप। जिससे क्या होगा, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपको वहां पे आखिरी में जल्दी जल्दी जो फैक्ट्स, अच्छे एग्जांपल, अच्छे कोट्स को आप लिख पाएंगे। एक ये तरीका है। एक क्या है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो सारे टॉपिक्स हैं उसमें से हर टॉपिक के आपके एक एक पेज के नोट्स बना लेते हैं लोग, कि भाई ये सपोज करो एजुकेशन है तो एजुकेशन में आपने एक पेज में बना लिया कि एजुकेशन के ये फैक्ट्स हैं, ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशन है, उसके 2-2 लाइन लिख दिए। तो जब भी आप पढ़ने रिवाइज करने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, तो जब भी आप जा रहे हैं एग्जाम देने से पहले जल्दी जल्दी देख लिया आपने कि हाँ एजुकेशन के ये 8-10 पॉइंट हैं, हेल्थ के ये 8-10 पॉइंट हैं, गवर्नेंस के ये 8-10 पॉइंट है, एनर्जी के ये 8-10 पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के 8-10 पॉइंट है, एक एक पेज में आपने मेंटेन करके रख लिया। अब ये नोट्स आप हैंड रिटन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप अपने आईपैड, लैपटॉप, इन सब पे बना सकते हैं और उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप अपना कुछ लोग ऑडियोज में भी वो बनाते हैं कि जल्दी जल्दी सुन लें, पर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरे हिसाब से या तो आप अपने हैंड रिटन करिए या फिर आप अपने आईपैड और लैपटॉप में ये बनाइए नोट्स, ताकि आप आसानी से कर पाए। अब इसी पेपर में जब आप ये सब कर लें, एक जगह नोट्स बना लिए आपने, तो नोट्स आपके इतने कंसाइज होने चाहिए कि आखिरी में हर टॉपिक के या हर पेपर के जीएस 1, 2, 3, 4 वो नोट्स आपके 50 या 60 पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नोट्स ही 400 पेज के हो गए, तो आप रिवाइज कैसे करेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप 2 घंटे में रिवाइज करके खत्म कर लें उस पेपर को, कि सुबह उठे, सुबह जाने से पहले 2 घंटे आपके पास, आपने देख ली जल्दी जल्दी सारी चीजें। तो नोट्स आपके 60 या 70 पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए हर पेपर के। अगर आप अपने 70 से 80 पेजेस में पूरे के पूरे पेपर को समराइज कर पा रहे हैं तो दैट इज द आर्ट ऑफ गुड नोट्स मेकिंग, ना कि आप 400 या 500 पेजों के नोट्स बना रहे हैं, फिर तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, वो तो पूरा सिलेबस ही हो गया। नोट्स का पर्पस है कि आपको मेन हाइलाइट्स, मेन एग्जांपल, मेन पॉइंट्स, कीवर्ड्स, ये हाइलाइट्स आपको आइडेंटिफाई हो पाए और ताकि आप उनको ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।